Hello and welcome. You're watching Goa365 News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. Goa job scam row deepens as Congress demands swift action and protection for whistleblower Pooja Naik. Goa Forward Chief Vijay Sardesai calls the rupees 17 crore recruitment racket a chain marketing scam. Double in flower built for coal transportation, says South Goa MP Viriato Fernandez as he slams MLA Movin Gudino and National Highway Authority of India, questioning the project's true purpose and execution. And we begin with the top story for the day. Goa's job scam saga deepens, stirring questions of power and accountability. After Pooja Naik's explosive claims naming top officials and a minister, GPCC Chief Amit Patkar demanded swift action and protection for her, saying the issue now goes beyond corruption, exposing cracks in the state's credibility. Meanwhile, Goa Forward Chief has called the job scam a chain marketing racket, adding to public outrage. Patkar referred to recent revelations by Pooja Naik, who had publicly claimed on camera that a minister, an IAS officer and a chief engineer were part of a recruitment racket involving cash transactions for government jobs. काल पूजा नायकान खुलासो केला की 17 करोड रुपया ती म्हणटा ट्रान्झॅक्शन आपण केले. जवळपास 600 जॉब्स आपण दिले. तिने उल्लेख केलो एका आयएस ऑफिसराचो, जो व्हिडिओ जो आयला तातून ब्लर सम चीफ इंजिनियराचोय ती उल्लेख करता. त्याच्या भायर ती म्हणटा की मंत्री जो 2019 जो मंत्री आशिल्लो, पीडब्ल्यूडीचो मंत्री, ताका आपण पैसे दिले. परवरे कितें ऑफिस आशिल्ले त्या ऑफिसान म्हणटा ती आमी वचून थंय मेळटाली, फॉर्मां भरताले, पैशांचे ट्रान्झॅक्शन जाताले. तिने हेय सांगले की 2000च्यो नोटी आणि त्या वेळावयल्यो 500 नोटी घेऊन या. जेन्ना ती ओपन कॅमेराकडे जर खुलासो करता म्हणजे हाजोर जेन्ना तिचे इंटरोगेशन जाले, हो सगळो डेटा तिने पोलिसांक दिला आसतलो, इंटरोगेशनान दिला आसतलो. आता 2019 जर पीडब्ल्यूडी मंत्री जर आम्ही पळयत जाल्यार तो आज बीजेपीन आसा मरे. लोकसभाच्या टायमार तो बीजेपीन गेल्लो परत सपोर्ट करपाक. So why the chief minister has not acted, or why the police department has not arrested or filed a charge sheet on him? म्हाका दिसता कोण तरी मुख्यमंत्री या बीजेपीच्या एक्स आमदाराक मंत्र्याक वाचोवपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न चल्ला. येवन तिने तेय सांगला 24 वरां भितर जर तर खुलासो जायना जाल्यार आपूण विथ फॅक्ट्स विथ प्रूफ खंयचो मंत्री हे मिडिया मुखार हाडटली हे तिने दवरला. गोंयान ज्या प्रमाणे आज लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला, आज आम्ही पळयतात की गोंयकारांचे हांगा गळे कापतात. प्रमोद सावंतान पयली म्हणल्यार पूजा नायकाक इमिजिएटली तिका सेक्युरिटी दिवपाक जाय, कित्याक तिच्या लायफाकडे धोका. जेन्ना ती ओपनली सांगता की 17 करोड रुपयाचे ट्रान्झॅक्शन, इमॅजिन द काइंड ऑफ मनी, हे फाल्यां कोण इन्वॉल्व आहा ते तिकाय उडयतले. सो म्हाका दिसता तिका पयली पुलीस प्रोटेक्शन इमिजिएटली दिवपाक जाय. आणि पुलिसांकडेचो विश्वास म्हाका दिसता इल्लो इल्लो करून गोंयकारांचो वचपा लागला. कित्याक इंटरोगेशन ती भायर जर उलयता जाल्यार 100% तिने इंटरोगेशनान सांगला आसतलें कोण तो मिनिस्टर, कितले पैसे घेतिल्ले, कितले 600 फॉर्मां. सो वाय टील दीस टाइम प्रमोद सावंताच्या सरकारान उगी रावला? कोणाक हे प्रोटेक्ट करता? काय खुद्द मुख्यमंत्री हातून इन्वॉल्व आहा? हे म्हाका दिसता मुखार येवपाक जाय. चेन मार्केटिंग म्हणून आसता पळय, ते तुवें 5 जाणां what she has given yesterday is chain marketing of this government. But don't you think आता पयलीं कशें आसतालें पळय, हांवें नोकरी दिली आसत कोणाकूय, कोणाक आदार केलो, खंय फोन मारून अरे बाबा म्हजी पळय म्हणून तो गांथण घेवन येतालो. गोंयान जर गांथण घेतली ना जाल्यार तो इन्सल्ट म्हणटा आपल्याक. सो हांवें गांथण घेतल्या, सो आतां हांवें ब्रायब घेतल्या म्हणून तुजें. आतां गांथणेच्या जाग्यार हे पयलीं एडवान्स बुकिंगाक पयशे घेतात आनी कोटी घेतात. क्रोज, नॉट कावळो, क्रोर. आणि एकान 2 न्ही, ती सादी सांगता 17. तिने एक स्टार्टिंग फिगर घाला, तितले ताजे उरल्या म्हणटा ते प्रुडंटान घालून येवन जर 17 तिचे आयले तर ती खुश.
पूण 600 लोकां कडच्यान 17 घेतले ते जर कॅल्क्युलेट करून गेले तर व्हडलो फिगर आहा तो कॅल्क्युलेट करप म्हणजे गोंयच्या बजेटान भितर वचप आसता. Advocate Carlos also weighed in on the controversy. Story of Pooja Naik is something old. What she has made now demand is that either those people pay up or she is going to name them. I think this is kind of an extortion. A corrupt act is a corrupt act, and you don't get yourself out even if you have returned the money to somebody. A thief, when he gets caught, the act is robbing, and after you are robbed and you are caught, because you gave the money back or you gave whatever you robbed does not absolve you from the crime. The crime is committed when the theft takes place. Now, as far as her statement, I still see a rat in that statement, because if you notice very carefully, she has now funnily put her date line as 2019 to 2021. But we know cash for job scam was going on till now, till the bubble burst. And if it was an old issue, there was no question of people coming up 2 years, 3 years later and making noise. There were people who were even being victimized or being looted and being promised jobs as recent as the FIR being lodged. So the question would become, what is the game plan which is going on? Meanwhile, the controversy around the recruitment racket has spiraled into a political storm. What began as an alleged job-selling network has now morphed into a tug-of-war over money and power. It's a scandal that goes beyond fake appointments. It exposes how influence and money allegedly flow through the corridors of power. From recruitment to retaliation, the saga paints a troubling picture of how governance, bureaucracy, and politics may be intertwined, confirming what many of Goa's youth have long feared, that the government jobs are for sale. As Goa's job scam unravels, the big question remains: will the Goa government finally investigate itself, or will another chapter of political protection quietly begin? Hiru Mahale, William Rodriguez, Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching News Now on Goa365. Welcome back. In Goa, opposition parties have raised red flags over the timing of the special intensive revision of electoral rolls, coinciding with the upcoming Zilla Panchayat polls on December 13th. AAP alleged that the overlap could compromise transparency and fair conduct of elections in the state. The Aam Aadmi Party have urged the Election Commission to defer either the voter list revision or the Zilla Panchayat elections, warning that conducting both together could strain administrative machinery and deny political parties the chance to monitor the process, risking fairness and voter inclusion in Goa. आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात गोवा में हो रही SIR प्रक्रिया को लेकर थी। गोवा में SIR की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल निकलना है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि गोवा में इस समय ज़िला पंचायत का चुनाव चल रहा है। 13 दिसंबर को ज़िला पंचायत का चुनाव है। आज उसकी रिजर्वेशन की घोषणा हुई है। 2 से 3 दिन में आचार संहिता ज़िला पंचायत के चुनाव की लग जाएगी। सो स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव चल रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, कैंपेन में इन्वॉल्व होंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को SIR की प्रोसेस को मॉनिटर करने का, ओवरसी करने का कोई भी समय नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने BLAs होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे समय पे अपॉइंट करती हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स चुनाव के कैंपेन में लगे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो SIR की मॉनिटरिंग के प्रोसेस में नहीं घुस सकते।
इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि ये दोनों प्रक्रिया, एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ जिला पंचायत का चुनाव गोवा में एक साथ क्यों किया जा रहा है। जिला पंचायत का चुनाव 3 हफ्ते बाद हो सकता था, एसआईआर की प्रक्रिया 3 हफ्ते के बाद शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि एसआईआर की प्रक्रिया और जिला पंचायत के चुनाव को बिल्कुल एक समय पे, बिल्कुल एक इलेक्शन मशीनरी के साथ गोवा में ऐसी हबड़ा तबड़ी के साथ किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो एसआईआर अब 12 स्टेट्स में शुरू हुई है, इंक्लूडिंग जो गोवा में एसआईआर चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस बनाया है कि अगर गलत तरीके से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम आ जाए तो अगर कोई रॉन्गली इंक्लूडेड है उनको नोटिस भेजा जाएगा, पूरी जांच होगी, उन्हें क्या कागज़ जमा करने हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड हो जाता है, जिसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आता, उसके किसी भी रिकोर्स के बारे में एसआईआर के सर्कुलर्स में चर्चा नहीं है। उस व्यक्ति को फिर से नए वोटर के तौर पे ही इनरोल करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब मैं एक वोटर हूँ, मैंने पिछले चुनाव में लोकसभा में वोट डाला, मैंने ज़िला पंचायत के चुनाव में वोट डाला, मुझे पता कैसे चलेगा कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम ही नहीं आया है। तो इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि रॉन्गली एक्सक्लूडेड, कि किसी का नाम अगर गलत तरीके से लिस्ट से छूट गया है, उसके लिए भी कोई प्रावधान होना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार वोट का अधिकार मेरा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। और अगर मेरा नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से छूट जाए तो ये इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है कि मेरा नाम फिर से जोड़ा जाए, मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि मुझे अपने वोट का अधिकार वापस मिले। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Vaishnavi Salgaonkar for Goa365. Taxpayer money is at risk and the project's purpose is questionable, said South Goa MP Captain Viriato Fernandez, criticizing Dabolim MLA Movin Gudino and the National Highways Authority of India. The 4-lane Dabolim flyover, initially presented as easing traffic, now faces scrutiny after the court-mandated pillar height reductions for compliance with flying zone restrictions. Captain Viriato, criticizing Dabolim MLA Movin Gudino, stated the flyover was first claimed to reduce congestion and improve safety, but has now been admitted to primarily serve coal transportation from the port. He added the flyover design was meant to obstruct Dabolim airport operations by exceeding permissible heights, and alleged it favored private interests, including the Mopa airport and casino property sales. या मिनिस्टरान कितें सांगलें काल कि वो फ्लायओवर इज टू फॅसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो फ्रॉम एमपीटी जे एमपी आसा टू स्ट्रेट आउट ऑफ गोवा. हांव रिपीट करता, ताणें कितें सांगलां तें, हो फ्लायओवर एमपीटी कडच्यान जो कार्गो येता ताका फॅसिलिटेट करपाक. आनी जेन्ना पयलो फ्लायओवर जेन्ना प्रपोज केल्लो तेन्ना ह्याच मंत्रीन कितें सांगुल्लें, गर्दी जाता थंय लोक एअरपोर्टाचेर येता तांकां सुविधा करपाक हो फ्लायओवर करता. केदो फोटींग तो पळय, ह्याच मनशान फोटी मारलेल्यो. आनी आमी तेन्ना सांगुल्लें हो फोटी मारता, हो फक्त कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक. काल ताणें स्वता सांगलें पळय, हातून दाखयलें केदो व्हडली फोटी मारलेली पळय ती. आतां दुसरें आमी सांगुल्लें, हो जो फ्लायओवर हाडटा तो फक्त एअरपोर्ट हो बंद उडोवपाक. कित्याक तो प्रायव्हेट एअरपोर्ट पळय मोपा आसा, त्या एअरपोर्ट बांदतना 37 प्रॉपर्टी खंयचो मंत्री इन्वॉल्ड आसा तो ह्या मंत्रीन सांगपाचें. तो आसा काय ना पळय तो क्लॅरिफाय करपाचें, नाल्यार आमी 37 सेल डीड दाखयता. कोण मंत्री इन्वॉल्व आशिल्लो प्रॉपर्टी विकपाक डेल्टिनांक पळय तो, मागीर तोंड उगडपाचें ताणें.
हे आम्ही आरटीआय मारून हे सेल डीड काढलेल्यो पेडणेच्यान. कोणे विकल्यात पळय ते सगळे 37 प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सुमार 20 लाखा वयर कोणे पैसे केले. पेडणेच्या लोकांक कोणे भायर उडयले शेतकामती. आणि दुसरे ताणे त्या डेल्टिनाक विकला. थंय सगळे काझिनो येतात. थंय तो प्रायव्हेट प्लेयर तो थंय एअरपोर्ट चलयता पळय तो. सो ताका फायदो जाय. हो एअरपोर्ट आसूं सर कॉम्पिटिशन. तो हो तर एअरपोर्ट बंद उडयलो सगळे बिझनेस त्या एअरपोर्टार वेतले. त्या खातीर हो एअरपोर्ट बंद करपाक ताणे कोणे हाका आदेश दिलो. आणि त्या खातीर कसो एअरपोर्ट बंद करतलो. फ्लायओव्हर करया ताची हायट वाडोवया. आणि आम्ही पहिले सांगले हो फ्लायओव्हर हाडटा कित्याक एअरपोर्ट बंद करपाक. कित्याक हायट जर इन्क्रीज जाली जाल्यार खंयचोच पायलट आपणाचे प्लेन घेवन देंवचो ना. म्हणजे ऑटोमॅटिकली आमी करूंक ना बंद. पायलट लँड करपाक सोदिना. While Fernandes criticized the project, Coutinho defended it, saying some people can't see the progress happening. He added that despite the flyover being nearly 80% complete, legal proceedings and the court-mandated adjustment of 17 pillars to comply with flying zone limits have caused delays. ती कामां सुरू जातली. दाबोले सगळ्याहून व्हडले आमचे काम मुद्दम सांगता 550 crore फ्लायओव्हर येदो आमचे ते 80% कंप्लीट जावपाचे. आमच्याच लोकांनी नोसाय करून कोणा मुखार काढून हायकोर्टान गायलो ती हायट प्लेन हाडटलो म्हूण. एक्चुअली अशें कांयच नासलें. पण आता ते हायट देंवयता म्हणजे बेस्ट बेकार ते कट करचे पडले पिलर. कोणाचे पयशे लोकांचे पयशे हांकां कांय काळजी ना. हांकां नाका तो प्रोजेक्ट जाल्लो. तेणी खूब प्रयत्न केली ते फ्लायओव्हरच बंद दवरपाक. फ्लायओव्हराची कित्याक गरज आहा ती सांगता. आता मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी ट्रॅफिक वाडपाची आसा. ट्रॅफिक वाडले काय व्हडले ट्रेलर वाडटले, व्हडले ट्रक वाडटले, व्हडल्यो बसो येतल्यो. कित्याक ते क्रूज पॅसेंजर टर्मिनल जाता. चडशे ते सायडी वयता ते सावथा वयता ते सगळे बसींनी वयतले आनी हेवी ट्रॅफिक तेजेर जातली. आमचे बोगमाडेसून येवपी हिंगासून येवपी हे रस्त्यार जॉयन जावपी एअरपोर्टा कडेन कशे लोक प्रवास करतले. ब्लॉक जावन उरतले न्हू वरांचे वरान ट्रॅफिकान. एक टायमा म्हाका याद आसा एअरपोर्टा भितर सरपा आनी ते सायडी वचपा म्हणजे 1 वर लागतले. जाताले काय ना लोक विसरले कित्याक हांवें सॉल्व करून दिले. आनी म्हाका याद आसा एक सेक्रेटरी पंचायत हांवेंच ताका कामाक लायिल्लो दाबोलेचो. तो बाबडो थिंगा मेलो एक्सिडेंट जावन. तेन्ना हांवें डिसिजन घेयलें ताबडतोब हांव हिंगा फ्लायओव्हर हाडटलो म्हणून. आनी लास्टाक फ्लायओव्हर फर्स्ट फ्लायओव्हर म्हणजे आतां येता ते दुसरें फर्स्ट ग्रेड सेपरेटर जो आमी म्हणटा. कोणे हुंय येयले ते दाबोले येयले. फर्स्ट फ्लायओव्हर वॉज इन दाबोलीम. Hiru Mahale, Gautami Gaukar and Arun Naik for Goa365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching News Now on Goa365. Welcome back. And lastly for the weather, Sunday shaping up just the way Goa likes it. Calm skies, easy breezes and sunshine that refuses to clock out. The monsoon may have left weeks ago, but its memories are finally drying up. Here's the full weather forecast for Sunday. That weak cyclonic swirl over Karnataka has now fizzled out completely, leaving Goa to bask in steady northeasterly winds. Translation: dry, stable and beautifully predictable weather, perfect for Sunday plans. Saturday saw clear skies across the state. Panjim warmed up to 31.3 degrees Celsius, while Mormugao dipped to a comfortable 23.4 degrees Celsius overnight. Sunday is set to follow suit, with highs near 32 degrees Celsius and nights around 25 degrees Celsius. Expect a touch of fog early on, just enough to give your morning drive a cinematic glow before the sun burns through. By noon, it's all golden light and blue horizons. No warnings from the IMD office, and the sea remains gentle, ideal for a beach day, a boat ride or simply doing nothing at all by the waves. So as Goa wakes to a soft mist and ends the day in sunshine, it's safe to say Sunday's forecast is all smiles. Perfect day to trade screens for sea breeze. From Miramar to Benaulim, the forecast says get outdoors and make the most of it. Dry weather likely till November 14th. Foggy morning, clear afternoon ahead. No weather warnings issued. Maximum and minimum temperature on Sunday 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Bureau Report Goa365 with inputs from IMD.
That's all from me, Manish Parab, and the entire News Now team here at Goa365. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv, and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again at 7:30 p.m. tomorrow right here on Goa365.